तो हेडिंग इज काउंटर्स. काउंटर्स में आप लिखिए. स्टार्ट करेंगे हेडिंग एज काउंटर्स. Counters are used to count number of clock pulses. Counters are used to count the number of clock pulses. Counters are used to count. Counters are used to count number of clock pulses applied to a given circuit. Yeah, number of clock pulses applied. Counters are used to count the number of clock pulses applied. Point number one. Point number two. They find application as या counters की application जो है, that is first one. They can be used as frequency dividers. A counter can be used as a frequency divider. मतलब ये कि हमने इनपुट 100 हर्ट्ज, आउटपुट दे सकता है 50 हर्ट्ज. समझ आया? A counter can be used as a frequency divider, or we can say waveform generator. Waveform generator or timers. They can be used as timers to keep the timing, track of timing. Yes, please. Frequency, they can be used for frequency measurement. That is, we give input, हम कोई frequency देंगे और आउटपुट पे अकॉर्डिंगली उसका काउंट आ सकता है. Frequency measurement. Stop everything what you are doing. जो भी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया. नेक्स्ट. सो एक काउंटर क्या होता है? ये एक ऐसा सर्किट होता है. So this is the block diagram of a counter, where you can have multiple bits. Say for example, Q3, Q2, Q1, or else I'll write it this way, like 2, 1 and 0. ठीक? आप इनपुट इसको देंगे, say clock. Now this clock, if it is positive edge triggered, this is 1. If it is negative edge triggered, we have to change the symbol. ठीक है? So ये होगी block diagram of a counter, simple block diagram. यहाँ से आप ये inputs दे रहे हैं इसको, and यहाँ से आप इसका output दे रहे हैं. Or else you can even erase this part because clock itself is the input actually of a counter. Okay? ये कहलाएगा 3-bit counter. क्योंकि इसका eyes on board, please follow. This is just a class of 20 minutes hardly, because we are on a Friday. So make sure you listen to every dot that I say. So this is a 3-bit counter. 3-bit counter because it has 3 bits in the output. Okay. Next point लिखिए. A counter designed using n flip-flops. क्योंकि देखिए ये मैंने कहा ये काउंटर है, ये किससे बनेगा? ये फ्लिप फ्लॉप से ही बनेगा. 2-3 फ्लिप फ्लॉप्स हमने जोड़ दिए तो बन गया काउंटर. ठीक है? काउंटर किससे बनता है? फ्लिप फ्लॉप से. मोर देन 1 फ्लिप फ्लॉप्स आर कंबाइंड, तो उससे बनता है एक काउंटर. बेटा आप थोड़ा खामोश रहेंगे? n flip flops से बनता है. Say if I have a counter which uses n flip flops, the maximum possible states in a counter with n flip flops
maximum possible states can be given as capital N and are equal to, so I say n flip flops hai, they can generate max n states. Eyes on board please. N flip flops max n states, and these states are given as n is equal to 2 raised power n. Visible है? अगर हमारे पास n फ्लिप फ्लॉप्स है, मैक्स इससे हमने काउंटर बनाया, इसकी आउटपुट मैक्सिमम स्टेट्स होंगी कैपिटल N. सपोज हमने डिनोट किया उसको कैपिटल N से, देन the relation between these two is given as, that is maximum number of states that a counter can generate using n flip flops is 2 raised power n. ठीक है, this is the ideal case. ठीक है. Similarly, if we want to find n, मुझे कितने flip flops लगेंगे to generate capital N states? The relation is this. What is this capital N? Maximum possible states. Maximum possible states. एक और टर्म लिखिए इसके बाद, used states. Used states. इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे. Used states क्या होता है? Eyes on board please. यूज स्टेट्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप खुद से लिखेंगे वहां पर. और जस्ट टू टेल यू, यूज स्टेट्स होता है एक काउंटर जो हमने डिजाइन किया, मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स में से कितनी स्टेट्स को यूज कर रहा है, लेकिन इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे वहां पर. सो देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मॉडुलस काउंट और मॉड काउंट. मॉडुलस काउंट, नेक्स्ट टर्म लिखिए, मॉडुलस काउंट और मॉड काउंट. ठीक है, आई एम गोइंग फास्ट, आई नो, बट दीज आर जस्ट बेसिक टर्म्स. आई डोंट थिंक यहां पे फास्ट स्लो मैटर करता है. ठीक है, इसमें कुछ समझने की बात अभी है नहीं, जस्ट यू आर गेटिंग अवेयर ऑफ वेरियस टर्म्स दैट यू विल सी. ओके, मॉड काउंट इज डिफाइंड एज, मॉड काउंट क्या होता है? द नंबर ऑफ स्टेट्स used in a counter is formally known as mod count. ठीक है, the number of states used by the counter is formally known as mod count. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं. सपोज हमने एक 3 बिट काउंटर बनाया. सो मैक्सिमम स्टेट्स क्या है इस 3 बिट काउंटर की? मैक्सिमम स्टेट्स कितनी होंगी? 8. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स 2 raised to 3, दैट इज 8. लेकिन सपोज मैंने इसको मॉडिफाई किया इस तरह से, that I used only 4 states, कि मैंने खाली 4 ही स्टेट्स यूज की, बाकी 4 मैंने स्किप की, यूजिंग सम मैकेनिज्म, say for some time being, using some gates and all that. मैंने क्या किया, मैंने कितनी स्टेट्स यूज की? 4 स्टेट्स. सो इसका नंबर 13 मॉड काउंट क्या आएगा? इसका मॉड काउंट आएगा 4. ओके, लेट्स से जस्ट हमने 5 स्टेट्स यूज की, बिकॉज़ दैट वाज कंफ्यूज. 5 स्टेट्स हमने यूज की, तो ऐसे काउंटर के लिए जिसकी हमने 5 स्टेट्स यूज की, उसको हम कहेंगे मॉड 5 काउंटर. ठीक है, उसको हम कहेंगे मॉड 5 काउंटर. क्यों कहेंगे मॉड 5? 5 स्टेट्स की हमने यूज की. ठीक है, हाँ,
यूज स्टेट होगा 5 ये सेम वही मैंने कहा ना यूज स्टेट्स को ही फॉर्मली यूज्ड स्टेट्स को ही फॉर्मली हम कहते हैं मॉड काउंट ठीक है सो 5 will be the mod count of such a counter पहली बात दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट बात देख लीजिए यहां पे सपोज मैंने क्लॉक सिग्नल दिया था इसकी फ्रीक्वेंसी थी 100 मेगाहर्ट्ज आइज ऑन बोर्ड प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गेट पर्सपेक्टिव से भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी सपोज क्लॉक मैंने दिया था इसकी फ्रीक्वेंसी थी 100 मेगाहर्ट्ज ठीक है सो अब यहां पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी आउटपुट फ्रीक्वेंसी ठीक ये इनपुट फ्रीक्वेंसी है आर यू फॉलोइंग ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी नाउ a general expression for output frequency of a counter ये लिख दीजिए लाइन general expression for output frequency of a counter is the general expression is this over here I am writing output frequency is equal to f in which is this say this is f in divided by number of used states number of ठीक है so in case can I write it this way f in divided by mod number f in divided by mod number ये जल्दी से लिखो पहले has anybody written this is very important mod number f in divided by mod number. So now I have a question for you. Just need a block diagram. Block diagram बनाने काउंटर की उसके इनपुट में फ्रीक्वेंसी है f. ब्लॉक डायग्राम बनाने काउंटर छोटा सा ब्लॉक बनाओ इनपुट 1 बनाओ. f in is the input frequency. f block. इसको लिखिए f in यहाँ. हमने दी थी 100 मेगाहर्ट्ज. तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैंने इनपुट ली 100 मेगाहर्ट्ज और ये मॉड 5 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 100/5 ठीक है दैट इज करेक्ट सो दिस मींस if I see a counter which is mod n and input frequency is f output frequency is equal to f/n समझ रहे हो ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा कहां पे 5 स्टेट्स एक काउंटर 5 यूज स्टेट्स ठीक है क्वेश्चन देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल Question: a decade counter with clock frequency 10 megahertz. With clock frequency 10 megahertz. Find the output frequency. Find the output frequency. Find the decade counter. Decade क्या होता है? हाँ decade counter
have to decode something. You have to decode just one thing. What is the number of the used states for a decade counter? That is 10. So when you decode that, you get the answer. So yes, sir. What is the answer? 1 is the correct answer. You just question है decade counter has input frequency 10 megahertz. Find the output frequency. 10 input states. ठीक है? You just have to देखिए गेट में आपको क्वेश्चन इसी तरह आते हैं. आपको नंबर ऑफ यूज स्टेट्स यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन काउंटर का नाम दिया है. काउंटर का नाम क्या है? Decade rather. Decade is the right word, not decade. मैंने गलत वर्ड यूज किया. Decade counter. मतलब 10 होता है ना वो. ठीक है. So इसका मतलब यूज, इसका मतलब ऑड काउंट क्या है? 10. ऐसे क्वेश्चंस जो है थोड़े ट्रिकी होते हैं. You just have to decode some part from it. अभी आपने जी one more question at hand. We have two counters connected in cascade. We have two counters connected in cascade. एक है mod 5, दूसरा है mod 2. Output frequency will be Fn divided by cascade में multiply होता है, divide होता है, multiply होता है. यानी gain ना, gain जो होता है gain. आप आगे जाके एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम. क्या पढ़ेंगे? उसमें हर एक सिस्टम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग सर्टेन ब्लॉक डायग्राम. ठीक है. तो उस केस में जब दो गेन या दो सिस्टम्स का गेन कैस्केड में होता है तो अगेन मान राइट. सो वो मल्टीप्लाई होता है. इसी तरह यहाँ पे भी दोनों का मॉड काउंट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. Therefore, F out will be mod 5 into mod 2. That is 10 megahertz divided by 5 into 2. That is again 1 megahertz. दूसरा बहुत बड़ा वर्ड है क्या है? बस नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है रिपल काउंटर. नेक्स्ट हेडिंग इज नेक्स्ट हेडिंग है एक हेडिंग की पॉइंट दो हेडिंग सब लिखिए. रिपल काउंटर से क्या लिखिए आप? Encounters ये लाइन लिखिए. रिपल काउंटर से पहले ये लिखिए. Encounters मेन एक लाइन लिखिए, हाईलाइट कर दिए. रिपल काउंटर को काटिए. Encounters depending on clock pulse applied. Encounters depending on clock pulse applied. There are two types of counters. This is not true only for counters, but you will see for other circuits also. Encounters depending on clock pulse applied. There are two types of counters. One, synchronous counters. Second, asynchronous counters. One, synchronous counters. Second is asynchronous counters.
I want at least a difference of 5 points on your notes for this. ठीक है? With that we'll stop. इस पे आप एक छोटा सा